So we have studied till now that Mendel is the father of genetics, work on the pea plant, and he studied the 7 pair of contrasting character. So in monohybrid cross we have seen one character, that is F2 ratio, that comes out to be 3:1. We will study dihybrid cross. Here there will be two character and the F2 ratio will be 9:3:3:1. And we will study the three laws, that is law of dominance, segregation and independent assortment. Then there's a chromosomal theory that was given by Seaton and Bovrin, and Morgan work on the Drosophila, linkages and recombination. After that, important topics like sex determination in human, male XY and female XX. The father determine the sex, and bird and female determine. In birds, female determine the sex, and honeybees diploidy. So under disorder like Haemophilia is sex-linked recessive, color blindness is sex-linked recessive, sickle cell anemia autosomal recessive, Down syndrome is trisomy 21, Klinefelter is XXY, and Turner is XO. So best way to study is learn the basic term, Mendel and pea plant, monohybrid cross, law of dominance, law of segregation, test cross, dihybrid cross, law of independent assortment, chromosomal theory, Morgan linkage, recombination, sex determination, mutation, pedigree analysis, and genetic disorder. So these are all important key terms in the topic. So let's begin with what is a mutation. Mutation means a sudden heritable change in the genetic material. So genetic material can be DNA, gene or chromosome. So if there is a sudden change in the DNA or chromosome, this is called mutation. So that is sudden change in the genetic material. Why it is important? Because it tells about the new trait variation, sometimes diseases, sometimes useful for change for evolution. So mutation may be harmful, beneficial or neutral. For example, there is a gene normally makes the black hair pigment. So if there is a change in a gene, the hair color may change. So this change is due to mutation. Main type of mutation are genetic gene mutation and chromosomal mutation. So the gene mutation, when the change occur in the DNA sequence of the gene, it is called the gene mutation. This means only a small part of the DNA is getting changed. Means a gene is like a word that is made up of DNA letter. If one letter changes, the meaning may change. For example, if we have a DNA sequence, it changes by one basis. So this can change the protein formed. Type of gene mutation is point mutation, like change in one single nucleotide base pair. One base pair is replaced by another. This is known as the point mutation. For example, sickle cell anemia. In this disease, one codon changes in the beta globin gene. That is, glutamic acid is replaced by valine. So this is a point mutation. Then substitution on the basis on replaced by another base. Like A will be replacing by A will be becoming the G. So this may or may not change the amino acid. Then insertion. One more base are added into the DNA. This can disturb the reading frame. Deletion. One or more base pair are removed from the DNA, and this can also disturb the reading frame. Then frameshift mutation, when insertion or deletion changes the reading frame of the codon, this is called as the frameshift mutation. So why it is dangerous? Because after one insertion or deletion on codon, after that may change. So this whole protein may become abnormal. Chromosomal mutation, when the change occur in the chromosome structure or chromosome number, it is known as chromosomal mutation. This is bigger change than the gene mutation because it can affect many genes at one time. Then chromosomal mutation has two different types, that is change in the chromosome structure and change in the chromosome number. So if there is a change in the chromosome structure, then the structural chromosomal mutation are deletion, duplication, inversion and translocation. Deletion means a part of the chromosome is removed or lost, and duplication means a part of the chromosome is repeated, that is duplication. And inversion is a chromosomal segment breaks, turns around and joins again in a reverse direction, that is inversion. Translocation means a segment of the one chromosome, it shifts to the another chromosome, that is translocating. It is changing its position, location. So that is a translocation. So you can remember chromosomal structure, chromosomal mutation are deletion, duplication, inversion and translocation. Whereas if we see the numerical chromosomal mutation, here chromosome number changes, and this usually happens due to non-disjunction during meiosis. So non-disjunction means failure of chromosome to separate properly, because these are
the chromosome are not separating properly, that is non-disjunction, may result in the gametes like extra chromosome or missing of a chromosome. So type of numerical mutation is aneuploidy, where loss or gain of one or few chromosome is taking place. Like in Down syndrome, we see the trisomy 21, in Turner syndrome, that is XO chromosome, in Klinefelter syndrome, XXY chromosome. So this type inside the aneuploidy, where the monosomy where one chromosome is missing, that is 2n minus 1, and trisomy when there is one extra chromosome, that is 2n plus 1. Polyploidy means increase in the whole set of chromosome like 3n and 4n. So this is common in plants. Polyploidy plants are often large and more vigorous, but in animal, polyploidy is usually harmful. Classification based on a cause like mutation can also be classified by how it happens. Spontaneous mutation occur naturally on its own. The cause is DNA replication, error, or natural chemical changes. And induced mutation is caused by external agent like mutagen. What is a mutagen? An agent that causes the mutation. That is called a mutagen. There are type of mutagen like physical, chemical, biological. So physical means like from the X-ray, gamma ray or UV ray. They are the physical mutagen. Chemical mutagen are mustard gas, nitrous acid, base analogues. These are chemical mutagen. And biological mutagen means sometimes viruses or transposable elements. They can cause a change. So these are biological mutagen. They are classified based on the cell type, like somatic mutation and germinal mutation, where somatic mutation occurs in the body cell and not passed to the offspring. They affect only that individual. For example, mutation in the skin cell. And germinal mutation, it occurs in the gamete of the germ cell, like passed to the offspring, and it is important in inheritance and evolution. What is the effect of mutation? Mutation can have different effect like harmful, beneficial, or neutral mutation. So harmful mutation is cause the disease or abnormality like sickle cell anemia, and beneficial mutation means it give advantage. Some mutation may increase survival in changing environment, and neutral mutation there is no major effect. Mutation and evolution is like mutation is a source of genetic variety, and this variety is important for natural selection and evolution. So mutation is one of the raw material of evolution. And Hugo de Vries proposed the mutational theory of evolution. He worked on the Northern Lamarckian Kenya. He said that new species may arise by sudden heritable change, that is called the mutation. So we can classify mutations into gene point, frameshift, chromosomal, structural mutation, chromosomal numerical mutation, somatic, and germinal mutation. Now let's know the laws of Mendel. So what is the law of dominance? For a monohybrid cross, Mendel gave the law of dominance, meaning the two contrasting alleles that are present together, only one express itself, and this expression of allele that is dominant is expressed, and the hidden one is the recessive. For example, the tall will be dominating the short one. Then in the law of segregation, it is one of the Mendel's most important law, where the two alleles of the gene they are separated during the gamete formation. So each gamete receive only one allele. For example, the TT, that is tall and short plant, form the gamete. So the capital T and small t, they do not remain mixed. Why they are called as the purity of gamete? Because each gamete carry only one allele. What is the law of segregation and why it is important? Because it explains why the recessive trait reappears in F2 generation. If the allele is mixed permanently, the dwarfness would never come back. But since they separate and recombine, the small t can form again. And that is why the dwarf trait appears in F2 generation. Now we will see what is a test cross. A test cross is used to know whether a dominant looking individual is homozygous dominant or heterozygous. It is defined as a cross that unknown dominant individual with a homozygous recessive individual. For the unknown tall plant, it is unknown. That is crossed with a dwarf plant small t. For example, if we have capital T, and we cross it with small t, we get all the offspring of capital T small t.
that are all tall. And if we see that capital T, small t, we have taken, and if we have crossed it with small t, the offspring will be capital T and small t, small t. So the ratio is 1:1, that is 1 tall and 1 dwarf. So the conclusion that we get for a test cross is that if 1:1 ratio appears, unknown parent is heterozygous. Then dihybrid cross is a cross that involves two characters, and it is known as the dihybrid cross, where the Mendel studied the seed shape, that is round and wrinkle, and seed color, that is yellow and green. So here the round yellow, that is capital R, capital Y, small y, and wrinkle green is small r, small y, small y. The F1 generation, where the all offspring are capital R, capital Y, small y. The phenotype is all round yellow. This means the round is dominant over wrinkle and yellow is dominant over green. F2 generation in a dihybrid cross. Now the F1 plant are self-pollinated. The capital R, small r and capital Y, small y. We have taken it and then crossed it again. The gamete that we get is capital R, capital Y, capital R, small r, capital Y, small r, small y. After combining, we get the F2 phenotypic ratio. We get the F2 phenotypic ratio, that is 9 round yellow, 3 round green, 3 wrinkle yellow and 1 wrinkle green. So we get a ratio of 9:3:3:1 ratio. So what is special in the dihybrid cross? We get a new recombination appearance, that is round green and wrinkle yellow, and these were not present in parents. So this shows the different pair of allele behave independently. What is the law of independent assortment from the dihybrid cross? Mendel gave the law of independent assortment, means when two pair of traits are studied together, one pair of alleles segregate independently of the other. That means inheritance of the seed shape does not affect the inheritance of the seed color. So the round, wrinkle and yellow-green assort independently. So what do we learn in all the three laws of Mendel? First, the law of dominance, in which we saw one allele expressed in heterozygous condition and the other remain hidden. The law of segregation, in this we have studied two alleles separate during the gamete formation. In the law of independent assortment, we see two pair of allele assort independently. So the chromosomal theory of inheritance. Now we have studied that मेंडल ने 1865 में अपना वर्क पब्लिश किया था, बट लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, तो कम्युनिकेशन स्लो था बिकॉज तब इंटरनेट नहीं था. और जीन, लोग क्या समझते थे, जीन को समझ नहीं पा रहे थे, कुछ कंटिन्यूस वेरिएशन था, लाइक इसकी हाइट, स्किन कलर, तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे. तो मेंडल ने क्या किया, जीन को फिजिकल प्रूफ नहीं दिया, मतलब ये आइडिया सही था बट प्रूफ नहीं था. सो क्या हुआ, 1900 में तीन साइंटिस्ट, डी वरीज, कॉरेंस एंड स्केमाक, इन्होंने मेंडल का रिजल्ट दोबारा डिस्कवर किया. सो डिस्कवर क्या किया, तब माइक्रोस्कोप इम्प्रूव हुआ था. सो साइंटिस्ट ने देखा कि न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कि डिवाइड होने से पहले डबल होते हैं. सो डिवीजन के टाइम पे सेपरेट होते हैं, इन्हें बोला गया है क्रोमोसोम.
तो सिटिन एंड बोवरिन ये इन्होंने क्या बोला, जीन एक्चुअली क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। सो क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा है, मेंडल के जीन के बिहेवियर के जैसा है। जैसे क्रोमोसोम है यहाँ पे, वो क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होते हैं, जीन भी पेयर में होते हैं, एंड अलील जो होते हैं सेपरेट होते हैं। वेराज क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, गमीट्स गमीट फॉर्म में होते हैं, लेकिन वो सेपरेट होते हैं। क्रोमोसोम में क्या होता है, वन फ्रॉम ईच पेयर गोज टू द गमीट, और जीन्स में सारे सेम होते हैं। जैसे कि क्रोमोसोम का जो बिहेवियर है वही जीन का बिहेवियर है, ठीक है। तो जीन आर प्रेजेंट ऑन अ होमोलोगस क्रोमोसोम। सो मियोसिस, यहाँ पे इस फिगर में मियोसिस एक्सप्लेन किया गया है स्टेप बाय स्टेप, लाइक क्रोमोसोम पेयर अप, इसे हम बाइवेलेंट कहेंगे। मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है, मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं, और इसका रिजल्ट जो होता है वो है गमीट, जो कि है हैप्लॉइड, दैट इज एन। सो ईच गमीट गेट ओनली वन क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेयर, दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट इज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट का, जो कि ड्रोसोफिला के ऊपर किया गया था, फ्रूट फ्लाई के ऊपर। साइंटिस्ट का नाम है थॉमस हंट मॉर्गन। सो मॉर्गन ने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया मेंडल की तरह। सो वहाँ पे उसने एक्सपेक्ट किया कि रेशियो, उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि रेशियो क्या होगा कि 9:3:3:1। बट जो एक्चुअल रिजल्ट है, जो रेशियो है वो डिफरेंट आया, क्योंकि जो जीन्स थे वो सारे इंडिपेंडेंट नहीं थे, वो सारे एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट थे। व्हाट इज लिंकेज, जीन लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम आर इनहेरिटेड टुगेदर, मतलब सेम क्रोमोसोम वाले जीन साथ ट्रैवल कर रहे हैं। येलो बॉडी जीन और वाइट आई जीन यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम क्रोमोसोम पर हो सकते हैं। व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन, पर क्या होता है कि कभी कभी जो जीन्स है वो सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है मियोसिस की। सो द न्यू जीन जो कंबाइन फॉर्म होते हैं, ये एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट की वजह से होते हैं। सो मिक्सिंग ऑफ जीन इज इक्वल टू द रिकॉम्बिनेशन। सो इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या देखा मॉर्गन ने, कि कुछ जीन है बहुत पास है तो लो रिकॉम्बिनेशन होगा, कुछ जीन है थोड़े दूर है तो हाई रिकॉम्बिनेशन होगा। सो क्रॉस ये क्या शो कर रहा है, जीन क्लोज है टुगेदर, दैट इज जीन बहुत पास है, और रिकॉम्बिनेशन क्या है 1.3%। सो मोस्टली पेरेंटल टाइप है। एंड क्रॉस बी में क्या है, वीक लिंकेजेस है। सो जीन जो है वो दूर है, फार अपार्ट है, तो रिकॉम्बिनेशन कितना है 37.2%। सो यहाँ पे ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन टाइप्स है। लाइक क्लोज जीन मतलब लेस रिकॉम्बिनेशन, और अगर जीन फार है तो मोर रिकॉम्बिनेशन। देन एल्फ्रेड स्टोर्टवेंट ने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ किया इसका, किस चीज़ के लिए, डिस्टेंस मेजर करने के लिए बिटवीन जीन्स के बीच का डिस्टेंस, और जीन जेनेटिक मैप बनाने के लिए इन्होंने यूज़ किया है, एल्फ्रेड स्टोर्टवेंट ने। देन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला फिगर जो था, उसमें क्या हो रहा था, क्रोमोसोम अलाइन रैंडमली इन मियोसिस। सो यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, या इस वजह से यहाँ पे वेराइटी दिखेंगी। दो पॉसिबिलिटी, ऑरेंज प्लस ग्रीन साथ में जाएंगे, या फिर ऑरेंज या रेड साथ में जाएंगे। सो ये बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। सो द फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है, डिफरेंट टाइप ऑफ जीन, और ये हमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताता है। सो सेग्रीगेशन मतलब क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्रोमोसोम अरेंजमेंट रैंडम है, लिंकेजेस में क्या हो रहा है, जीन जो है वो एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, साथ में रहते हैं, और रिकॉम्बिनेशन में क्रॉसिंग ओवर से नए रिकॉम्बिनेशंस बनते हैं। सो जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम पे, और क्रोमोसोम कब सेपरेट होते हैं, मियोसिस के टाइम पे, और यही हमें मेंडल्स का लॉ एक्सप्लेन करता है। बट जीन्स अगर सेम क्रोमोसोम पे है तो ये लिंकेजेस दिखाएंगे, और अगर क्रॉसिंग ओवर कॉज कर रहे हैं तो रिकॉम्बिनेशन दिखाएंगे। क्रोमोसोम थैली किसने दी थी, सुटिन एंड बोवरिन ने क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी, मॉर्गन ने लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ड्रोसोफिला क्या है, मॉडल ऑर्गेनिज्म है, और लिंकेज में क्या हो रहा है, सेम क्रोमोसोमल जीन है। रिकॉम्बिनेशन क्या शो करता है, क्रॉसिंग ओवर, एंड क्लोज जीन मतलब लो रिकॉम्बिनेशन, और फार जीन मतलब हाई रिकॉम्बिनेशन।
पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, जो मैंने एंड किया था, कैपिटल टी स्मॉल टी इज हेट्रोजाइगस पर क्यों है। हेट्रोजाइगस का मतलब होता है, हेट्रो मतलब दोनों अलील डिफरेंट होते हैं, हेट्रो मीन्स डिफरेंट और जाइगस मीन्स पेयर। सो जब जीन का दो अलील जो है अलग अलग होते हैं तो उसे हेट्रोजाइगस बोलते हैं। जैसे टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी समझो। तो कैपिटल टी जो है वो टॉल डोमिनेंट है, स्मॉल टी इज ड्रॉफ रिसिव। सो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी को देखने के बाद हमें पता चलता है कि एक अलील दैट इज़ कैपिटल टी एंड दूसरा अलील दैट इज स्मॉल टी, सो दोनों डिफरेंट है, इसलिए कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर हेट्रोजाइगस। दैट मीन्स कैपिटल टी होमोजाइगस सेम है, स्मॉल टी होमोजाइगस सेम है, एंड कैपिटल टी स्मॉल टी इज हेट्रोजाइगस मतलब डिफरेंट है। सेम लेटर्स मतलब होमोजाइगस, डिफरेंट लेटर्स मतलब हेट्रोजाइगस। सो कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, हेट्रोजाइगस होने के बाद भी ये प्लांट क्या दिखाता है, टॉलनेस। क्योंकि क्या है, टी जो है टॉलनेस जो है डोमिनेंट ट्रेट है, वो क्या करता है, स्मॉल टी मतलब रेसेसिव ट्रेट को हाइड करने का काम करता है। इसलिए कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर द स्मॉल टी बिकॉज इट इज हाइडिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द ड्रॉफनेस। टॉल इज डोमिनेंट ओवर ड्रॉफ. If there are same letters, then it is homozygous. If there are different letters, then it is heterozygous. And capital T small t is heterozygous because it consists of two alleles, capital T and small t, both are present. If there is capital T, it have a same homozygous type. If there is small t, it is homozygous same. If there is capital T small t, it is heterozygous, that is different. So capital T small t is heterozygous because it contains two different alleles for the same character. Even though capital T small t is heterozygous, the phenotype is tall because T is dominant and it hides the small t that is recessive. Thanks for watching. Do like, share and subscribe BioMindscape.